नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे। नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिनि ज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे। अनाथस्य दीनस्य कृष्णातुरस्य भयातस्य भीरस्य भद्रस्य जन्तो त्वमेका गतिर्देवि निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे। दुर्बुद्धिने दूरकरी सद्बुद्धियापो मां पाहि ॐ भगवती भवदुःखकापो भूलो पड़ी भवरणे भटकू भवानी सूझे नहीं लगी कोई दिशा जवानी भासे भयंकर बड़ी मन ना उतापो मां पाहि ॐ भगवती भवदुःखकापो आरंकने उगरवा नथी कोई यारो जन्मांध छूं जननी हूँ ग्रही बाह्य तारो नाशु सुनो भगवती शिशुना विलापो मां पाहि ॐ भगवती भवदुःखकापो मा कर्म जन्म कथनी करता विचारो आसृष्टि मां तुझ विना नथी कोई मारो कोने कहूँ कथन योगतनो बलापो मां पाहि ॐ भगवती भवदुःखकापो हूँ काम क्रोध मद मोह कीच केलो आडंबरे अति गणो मदति बकेलो दोषो थकी दूषितना करी माफ पापो मां पाहि ॐ भगवती भवदुःखकापो ना शास्त्र ना श्रवणनो पयपान पीदु ना मंत्र के स्तुति कथा नथी काई कीदु श्रद्धा धरी नथी कर्या तव नाम जापो मां पाहि ॐ भगवती भवदुःखकापो रे रे भवानी बहु भूल थई छे मारी आ जिंदगी थई मने अतिशय अकारी दोषो प्रजाली सगड़ा तव छाप
चापो मां पाहि ॐ भगवति भवदुःखकापो खाली न कोई सड़छे विण पधारो ब्रह्मांड अणु अणु महिवास तारो शक्ति न माप गणवा अगणित मापो मां पाहि ॐ भगवति भवदुःखकापो पापे प्रपंच करवा बधिवाते पूरो खोटो खरो भगवती पण हो तमारो जाड्यांधकार करि दूर सुबुद्धि आपो मां पाहि ॐ भगवती भवदुःखकापो शीघ्रे सुने रसिक छंद जये कचिते तेनाथ की त्रिविधता पतले खचिते वादे विशेष वरियं बतना प्रतापो मां पाहि ॐ भगवति भवदुःखकापो श्री सद्गुरु चरणमा रहिने यजूछु रात्रि दिने भगवती तुझने भजूछु सद्भक्त सेवक तना परिताप चापो मां पाहि ॐ भगवती भवदुःखकापो अंतर्विषय अधिक ऊर्मिथता भवानी गाऊं स्तुति तव बड़े नभिने मृडानी संसार ना सकल रोग समूल कापो मां पाहि ॐ भगवती भवदुःखकापो मां पाहि ॐ भगवती भवदुःखकापो मां पाहि ॐ भगवती भवदुःखकापो। Vijayadashmi is a story of Mahishasura Mardini. Mahisha meaning buffalo, Asura meaning demon, Mardini meaning the defeating, Vijaya meaning victory, and Dashami referring to the 10th day of the month. Thus, this is the day that the buffalo demon was defeated. Who was Mahishasura and how was he defeated? Mahishasura was a king with the head of a buffalo and a worshipper of Lord Brahma. After many years of penance, Brahma was pleased and offered him a wish. Mahishasura, however, was engulfed in his greed for power and thus demanded immortality. Specifically, he wished that he would never be killed by man or animal on the face of earth. Lord Brahma granted him this wish and immediately cautioned that a woman will be the end of him. Mahishasura's ego did not consider a woman when making his wish, nor did it allow him to believe that a woman could harm him. Thus, he continued his rampage against the three loka, or three worlds, of earth, heaven, and hell. He even tried to capture Indraloka, the kingdom of Lord Indra. The Devas decided to wage a war against him, but no one could defeat him due to Lord Brahma's boon. The Devas thus approached Lord Vishnu for help. Vishnu decided to create a female form to defeat Mahishasura, but consulted Lord Shiva, as he is the god of destruction. Combining their cosmic powers, the Trimurti, or Brahma, Vishnu, and Shiva, created Durga. Thus, Durga combines all the feminine aspects of the Trimurti, namely Saraswati, Lakshmi, and Parvati, as one mother goddess. Goddess Durga valiantly fought Mahishasura, who kept changing his shape to become different animals and mislead her. Finally, when he transformed into a buffalo, Goddess Durga, riding on her lion,
stabbed him with her trident, and thus defeated Mahishasura. Shakti, or the divine cosmic energy that permeates the universe, defeated the ego manifested as an asura. Peace prevailed over destruction for the benefit of all. ऐगिरि नन्दिनि नन्दित
राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम मुख में तुलसी घट में राम जब बोलो तब सीताराम मुख में तुलसी घट में राम जब बोलो तब सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हाथों से करो घर का काम मुख से बोलो सीताराम हाथों से करो घर का काम मुख से बोलो सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कौशल्या का दुलारा राम दशरथ जी का प्यारा राम कौशल्या का दुलारा राम दशरथ जी का प्यारा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बंसरी वाला है घनश्याम धनुषधारी सीताराम बंसरी वाला है घनश्याम धनुषधारी सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम बोलो श्री
श्री रामचंद्र भगवान की जय। Behind Dashera is that of the Dashahara, or literally defeat, on the 10th day of the month, or more precisely, defeat of Lanka King Ravana by Lord Rama. You could say it is a story of good over evil, but it's really the story of one man sacrificing for the benefit of all versus another man sacrificing for his own ego. But how did we get to this point? Long ago, Dasharath, the king of Ayodhya, had 3 wives and 4 sons. Although Rama was the eldest son to Mother Kaushalya, Bharata was the son of Dasharatha's second and favored wife, Kaikeyi. Meanwhile, Sita was born to King Janaka in a neighboring city, although she truly was the spiritual daughter of Bhudevi, or Mother Earth. Sita chose Rama as her bridegroom and they married, exemplifying an ideal couple to all. Eventually, King Dasharath decided to give his throne up to Rama, except Queen Kaikeyi forced him to choose Bharat instead based on the oath the king took with her. The king was embarrassed, and it was Kaikeyi who told Rama the king's decision, and that he was now banished for 14 years. As an idle son, Rama agreed and went with Sita and Lakshman at his side. One day, Rama and Lakshmana wounded a Rakshasa, demon princess who tried to seduce Rama. She returned to her brother Ravana, the 10-headed ruler of Lanka. As retaliation, Ravana prepared a devious plan to abduct Sita after hearing of her beauty. He sent one of his demons, disguised as a magical golden deer, to entice Sita. To please her, Rama and Lakshmana went to hunt the deer down. Before they did, they drew a protective circle around Sita and told her that she would be safe for as long as she did not step outside the circle. After Rama and Lakshmana left, Ravana appeared as a holy man begging for alms. The moment Sita stepped outside the circle to give him food, Ravana grabbed her and carried her to his kingdom in Lanka. On his way to find Sita, Rama came across a group of Vanara who offered to help him. As part of this group of Vanara, Lord Hanuman offered to help since he had extraordinary powers. He used his ability to fly to search for Sita. Ultimately, he found his way to Lanka, and having found Sita, let her know that Rama would come to save her soon. But Hanuman was captured, and Ravana ordered his tail set on fire. However, Hanuman used his tail to set Lanka on fire. Then he flew back to Lord Rama so they could set out to Lanka. At the tip of Bharat, Rama, Lakshmana, and the Vanara army built a bridge of floating lava rock to help the army travel across Lanka. An epic battle ensued. Rama killed several of Ravana's brothers and eventually confronted the 10-headed Ravana. He killed Ravana, freed Sita, and they returned to Ayodhya, where the Bharata returned the crown to him. Ravan's 10 heads represent the vices in human souls we must overcome in order to eventually achieve self-realization. The ultimate goal, Rama removes kama or lust, krodha or anger, moha or delusion, lobha or greed, mada or pride, matsriya or envy, manas or mind, buddhi or intellect, chitta or will, ahamkar or ego. Once we go beyond all of these, we realize in God, or in simple terms, we'll defeat Ravan and realize Rama. कनक मृग रूपधर कलमारिच करविग सुजन विमद दशास्य हृत जनक जाने शनु कनक मृग रूपधर कलमारिच करविग सुजन विमद दशास्य हृत जनक जाने शनु अनग पंकदीर संग
ಸಂಗದಂಜನೆಯನಭೋ ಮಣಿ ತನುಜ ಸಖ್ಯ ಕರಂಬಾಲಿ ತನುದಲನಂ ಈಶ ಕನಕ ಮೃಗರೂಪದ ಕಲಮಾರಿತ ಕರಮಿಗ ಸುಜನವಿ ಮದದ ಸಾಸ್ಯ ಹೃದನಕ ಜಾನ್ವೇ ಶರಣ ಅನಗ ಪಂಪದೀರ ಸಂಗದ ಜನೆಯ ನಭೋ ಮಣಿ ತನುಜ ಸಖ್ಯ ಕರಂಬಾಲಿ ತನುಜನನಮೀಶ ಮಗರಿ ಸನಿತ ಸರಿ ಮಗರಿ ಸರಿ ಮಪಮನಿ ಸರಿ ದಪ ಮಗರಿ ಸರಿ ಸರಿ ದಪ ನಿರಮ ಪದ ಗರಿ ಸದ ಸದ ಗರಿ ನಿರಮ ಗರಿ ಸದ ಭಾವಯಾಮಿ ರಘುರಾಮಂ ವನರೋತ್ತಮ ಸಹಿತ ವಾಯುಸೂನು ಕರಾರ್ಪಿತ ಭಾನುಷತ ಭಾಸ್ವರ ಭವ್ಯರತ್ನಾಂಗುಲೀಯಂ ವನರೋತ್ತಮ ಸಹಿತ ವಾಯುಸೂನು ಕರಾರ್ಪಿತ ಭಾನುಷತ ಭಾಸ್ವರ ಭವ್ಯರತ್ನಾಂಗುಲೀಯಂ ತೇನ ಪುನರಾನಿತ ನ್ಯೂನ ಚೂಡಮಣಿ ದರ್ಶನಂ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಉದದಿತಿರೆ ಶ್ರುತ ವಿಭೀಷಣ ಮಿಲಿತಂ ತೇನ ಪುನರಾನಿತ ನ್ಯೂನ ಚೂಡಮಣಿ ದರ್ಶನಂ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಉದದಿತಿರೆ ಶ್ರುತ ವಿಭೀಷಣ ಮಿಲಿತಂ ವನರೋತ್ತಮ ಸಹಿತ ವಾಯುಸೂನು ಕರಾರ್ಪಿತ ಭಾನುಷತ ಭಾಸ್ವರ ಭವ್ಯರತ್ನಾಂಗುಲೀಯಂ ತೇನ ಪುನರಾನಿತ ನ್ಯೂನ ಚೂಡಮಣಿ ದರ್ಶನಂ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಉದದಿತಿರೆ ಶ್ರುತ ವಿಭೀಷಣ ಮಿಲಿತಂ ಗಮಗರಿ ಸದ ಸಾರಿ ಗಮ ಪ ಪ ಸ
कलितवरसे तु बन्धं कलनिसीमपि सीतासन दलनमुरु दशकण्ठविदारणम् अतिधीरम् कलितवरसे तु बन्धं कलनिसीमपि सीतासन दलनमुरु दशकण्ठविदारणम् अतिधीरम् ज्वलनपूत जनकसुता सहितयात साकेतं ज्वलनपूत जनकसुता सहितयात साकेतं तज्जं तज्जं जं ता तज्जं जं ते तज्जं 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 ता तज्जं तज्जं जं ता तज्जं जं ते तज्जं 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 ता तज्जं तज्जं जं ता तज्जं जं ते तज्जं 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 ता तज्जं तज्जं जं ता तज्जं जं ते तज्जं 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 ता तज्जं तज्जं ता तज्जं ता तज्जं ते तज्जं तज्जं ता तज्जं ता तज्जं ते तज्जं 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 जं तज्जं जं ता तज्जं तज्जं तधिङ्गिणतता तधिङ्गिणतं ते तधिङ्गिणतं तधिङ्गिणतं ता तधिङ्गिणतं ते तधिङ्गिणतं तधिङ्गिणतं ता तधिङ्गिणतं ते तधिङ्गिणतं कलितवर सेतु बन्धं कलनिसीमपि सीतासन दलनमुरु दशकण्ठविदारणम् अतिधीरम् ज्वलनपूत जनकसुता सहितयात साकेतं विलसितपट्टाभिषेकं विश्वपालं पद्मनाभं रीम पनी पम पनी सा रि पा नम रि सा Sa
भावयामि रघुरामं भव्य सुगुणारामं भावयामि नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगत्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिनि ज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य कृष्णातुरस्य भयातस्य भीरस्य भक्तस्य जन्तो त्वमेका गतिर्देवि निष्ठारकर्त्री नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे त्वमेका सदा राधिता सत्यवादे अनेकाखिला क्रोधना क्रोधनिष्ठा इरा पिङ्गला त्वं सुषुम्ना च नाडी नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अरण्ये रणे शत्रुमध्ये अनले प्रान्तरे सागरे राजगृहे त्वमेका गतिर्देवि निष्ठारहेतु नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अपारे महादुष्टरे व्यन्तघोरे त्रिपत्सागरे मज्जतां देहभाजां त्वमेका गतिर्देवि निष्ठारनौका नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनादे सरस्वत्यरुन्धत्य मोघस्वरूपे विभूतिश्चित्कालरात्रिस्सवित्वं नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमश्चण्डिके खण्डतो दण्डलीला समुत्खण्डिता खण्डला शेषशत्रो त्वमेका गतिर्देवि निष्ठारबीजं नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे Symbolism of Navaratri, Vijayadashami, and Dashera. The 9 days or Navaratri that precede either Vijayadashami or Dashera all represent our spiritual journey towards realizing our true nature. We witness and are affected by so much pain, agony, and suffering. What is the way to true happiness? First, we must consider what we want to achieve.
We call it many things: self-realization, God-realization, nirvana, or even just true happiness. The story of Dashara was the story of overcoming the 10 vices, or human tools, we must cast away in order to realize the Rama in us. The story of Vijayadashami was the story of overcoming the ego through the power of Shakti. Another aspect of the journey is worshipping Durga, Lakshmi, and Saraswati for 3 days each. जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी मैया जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी मैया जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को मैया जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजै मैया रक्तांबर राजै रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजै मैया जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी मैया जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति मैया जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना
निश दिन मधुमाती मैया जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे मैया जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी मैया जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू मैया नृत्य करत भैरू बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा आओ बाजत डमरू मैया जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता मैया जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मनवांछित फल पावत मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी मैया जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती माल के तुम्हें राजत श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति मैया जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे मैया जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी मैया जय अम्बे
ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेसिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरहर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैतभ गञ्जिनि कैतभ भञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शतकण्डविकण्डितरुण्डवितुण्डितशुण्डगजाधिपते रिपुगजगण्डविदारणचण्डपराक्रमसौण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनिपाटितचण्डनिपाटितमुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि